मार्च को मेरी दुकान उन्होंने ले ली और मैं कब आऊं आपके पास? आज भी अगर मुझे न्याय नहीं मिला लॉर्डशिप तो मेरी तो पूरी दुकान और सब घर मेरा सब बैंक ले चुकी है, तो मैं कब आऊं लॉर्डशिप आपके पास? सब मैंने लगा रखा है, पूरा मेरा सब कुछ कब्जा ले लिया बैंक ने इस इंटरेस्ट रिपेमेंट न करने की वजह से। लॉर्डशिप मैं कब आऊं? मेरा सब कुछ तो गिरवे ले लिया बैंक ने, इन्होंने पेमेंट नहीं किया एडमिट अमाउंट का, और मैं कब आपके पास आऊं लॉर्डशिप? अगर काइंडली कोर्ट अलाउ मी परमिट टू मेरा अपना पक्ष रखने का मुझे 2 मिनट, जो क्योंकि टोटल झूठ बोला है इन्होंने अभी, वो सब मैं झूठ आपके सामने भी सत्य बता देता हूँ, एविडेंस के साथ इसमें है, पूरा एविडेंस है, इन्होंने झूठ बोलकर आपको मिसलीड कर रही है कोर्ट को। बट लॉर्डशिप मुझे मैं यहाँ पर रिलीफ के लिए आ रहा हूँ लॉर्डशिप, और मुझे अगर क्या हुआ कानून के मुताबिक आना पड़ता है। You one simple question, you please answer it. Don't go on after telling your entire history over here. You want this amount to be released. We have already passed an order on 5/5/22 with regard to the same, that all your contentions will be considered at the stage of final hearing. How can you file another application with a different language? The sum and substance is the same. I'm sorry, Lordship. मेरा substance. If you are sorry, then your apology is accepted. Then you stop arguing. Lordship, अगर you can't go on filing the same IA by just changing your language like this. But my IA is different in this case. Total different. अगर काइंडली कोर्ट अलाउ मी परमिट टू मेरा अपना पक्ष रखने का मुझे 2 मिनट, जो क्योंकि टोटल झूठ बोला है इन्होंने अभी, वो सब मैं झूठ आपके सामने भी सत्य बता देता हूँ, एविडेंस के साथ इसमें है, पूरा एविडेंस है, इन्होंने झूठ बोलकर आपको मिसलीड कर रही है कोर्ट को। All your arguments on the previous. Every time this case comes, every time you make the same submission. This is the different submission, Lordship. And honorable court the result is the same. We have considered it once. We can't go on considering application after application. But Lordship, you are misusing the court proceedings. मैं यहाँ पर रिलीफ के लिए आ रहा हूँ लॉर्डशिप, और मुझे क्या हुआ कानून के मुताबिक आना पड़ता है। Whatever the law permits, you must function within the 4 corners of law. आज भी अगर मुझे न्याय नहीं मिला लॉर्डशिप तो मेरी तो पूरी दुकान और सब घर मेरा सब बैंक ले चुकी है, तो मैं कब आऊं लॉर्डशिप आपके पास? सब मैंने लगा रखा है, पूरा मेरा सब कुछ कब्जा ले लिया बैंक ने इस इंटरेस्ट रिपेमेंट न करने की वजह से। लॉर्डशिप मैं कब आऊं? मेरा सब कुछ तो गिरवे ले लिया बैंक ने, इन्होंने पेमेंट नहीं किया एडमिट अमाउंट का, और मैं कब आपके पास आऊं लॉर्डशिप? किस स्टेटस पे आऊं? और फाइनल हियरिंग पे भी लगा है आज, फाइनल सुन लिया जाए, मुझे आज फाइनल पे भी लगा है। We are hearing only on this application. तो मैं एप्लीकेशन को काइंडली मुझे पूरा बोलने का मौका दिया जाए। Tell us, in our view, you are misusing the process of this court by filing application after application. That whatever relief that you are asking in your IA 2828 was an application which was filed earlier. We have considered this application. We have considered your case on merits. We have admitted it and we have said that all your contentions will hear at final hearing stage. Now the scenario is changed. Please wait till we finish. After having heard you, after having done all this, you are again filing this IA. So we don't know how many times you are going to file this IA. उस समय मेरा मकान बैंक ने नहीं लिया था, दुकान मेरी नहीं ली थी, आज मेरी दुकान मकान सब ले लिया इन्होंने, एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड अमाउंट का आज तक नहीं दिया। Pending final hearing. So now, firstly, this is against an interim order. Final order has already been passed. You have filed a review against that order. Technically, this petition is not maintainable. We cannot entertain this. It has to be dismissed. Even then, we are still entertaining. We are still saying, all right, we'll hear you later. Even that sympathy that we are showing, you don't want to take it. Once a final order is passed, can you agitate on an interim order? Final order हो चुका है कि नहीं? फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है लॉर्डशिप, मैं रिव्यू में जा चुका हूं और आ चुके वो सही है, और नोटिस हो चुका है। एक मिनट, फाइनल ऑर्डर हुआ कि नहीं? फाइनल ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने उसके पहले ही ऑर्डर पास कर दिया था कि जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा सब्जेक्ट टू कंडीशन दिस कोर्ट ऑर्डर, ये तो ऑर्डर पास हो चुका। नंबर 1, नंबर 2 करेक्ट, फिर भी फाइनल ऑर्डर हुआ है कि नहीं? लॉर्डशिप उसको रिव्यू में चैलेंज किया है, नोटिस हो चुका है। ऑर्डर हुआ कि भाई
रिव्यू हो Don't चुका try है। to become too clever in the court. We are asking you a question whether final order is passed or not. उसके पहले ऑनरेबल कोर्ट ने रूल निशी भी मेरे कोर्ट में मेरे केस में पास कर Is दिया that है। an answer to the question? Final order हुआ है कि नहीं? दो परिस्थिति में फाइनल ऑर्डर Final पास, order हुआ है कि नहीं? रूल निशी भी पास हो गया मेरे केस में। Sir, whatever your name is. विजय सोनी See, लॉर्ड, you are the party person. We are giving some leverage to you. Don't misuse it. लॉर्डशिप फाइनल ऑर्डर 2 मई को एक्स पार्टी हुआ है, एक्स पार्टी हुआ है। We are not asking that. Final order हुआ है कि नहीं? हुआ है. Correct? Agreed by that, you have filed a review. यस, That is pending. दैट वाज वापस ले लिया विद द लिबर्टी ऑफ, मैंने आपसे लिबर्टी ली है और मैंने रिव्यू फाइल किया है और वो रिव्यू पेंडिंग है। यस, Final order is also passed. In spite of that, we are still willing to hear you. Otherwise, this petition has to be dismissed because final order is passed. In spite of that, we are willing to hear you. highly obliged. But you don't want to listen. You are filing IA after IA after IA. This is nothing but contempt. You are misusing this court. लॉर्डशिप 22 मार्च को मेरी दुकान उन्होंने ले ली और मैं कब आऊं आपके पास? If you still want to argue, you please argue. We will hear you on this IA. So whatever we have told you, if you don't understand, we can't help you. Take on. Application is filed. In the following review. The relief sought for hearing was already considered by this court. It's order dated 5/5/2022. Petition was filed against an interim order wherein the respondents herein were directed to deposit 30% of the disputed amount. The plea herein was to the effect that the entire amount has been deposited and not 30%. On that question, the matter was admitted. Presently, an application 3252 is filed on the ground that the tribunal has since passed a final order dated 2 मई 2/5/2022. The petitioner party in person submits that he has filed a review seeking to review the final order. Even though this petition has become infructuous in view of the fact that the final order has been passed, when this petition arises out of an interim order, even then we are willing to hear the learned counsel, the party in person. So these circumstances we fail to understand as to how repeated applications are being filed by the petitioner but by the party in person seeking the same relief once again. Since the same has already been considered in our order dated 5/5/2022, 2828 is dismissed. With the hope that such applications are not filed in future. If not, the court would view it extremely seriously. IA 3252 would be considered at the stage of final hearing.